almost 0. It is very weak, almost equal to 0. Now let us take a cross section of this solenoid. Okay, let us take a cross section of this solenoid. तो इसमें करंट, इसमें वायर जो है यहां से आ रही है, तो ऊपर करंट आउटवर्ड होएगा. दीज आर वायर्स, सेक्शन ऑफ वायर्स. ठीक है, ऊपर करंट जो है आउटवर्ड है, डॉट्स लगा रहा हूं मैं. और नीचे करंट है दैट इज इनवर्ड, क्रॉसिस. यानी कि वायर ऐसे होगी, वायर ऐसे होगी, यहां से करंट बाहर आएगा और यहां से अंदर जाएगा. तो लेट पी बी ए पॉइंट वेल इनसाइड द सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइड के अंदर है ये पी पॉइंट. तो कंसिडर ए क्लोज पाथ ए बी सी डी. ऐसे पाथ कंसिडर करो, ए तो कंसिडर ए क्लोज पाथ ए बी सी डी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट में से पास करें पाथ. नाउ according to Ampere's circuital law, what is B dot dl? This is according to Ampere circuital law. B dot dl is equal to, over this closed path, what is B dot dl? B dot dl from A to B, B dot dl plus from B to C, B dot dl plus from C to D, B dot dl plus from D to A. D to A, B dot dl. This is equation number 1. Now what is B dot dl from A to B? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, इन दिस डायरेक्शन, एंड डीएल की डायरेक्शन भी की है फ्रॉम ए टू बी सेम. तो बीएल एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी डी एल cos 0 डिग्री is equal to, तो B is uniform inside magnetic field A to B dl. So this is equal to B. What is the total path length A to B? This is path length. किसके बराबर है total path length? This path can be from this end to this end. That is dl की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? L. तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है. आल्सो what is integration B to C B dot dl is equal to D to A B dot dl. These both are 0 because B to C and D to A, magnetic field and dl are perpendicular to each other. Magnetic field जो ऐसे है और dl क्या है, उसके perpendicular है, because P is perpendicular to dl. तो अगर दो वेक्टर्स perpendicular हो, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो ये दोनों 0 आ गए. अब रह गया C to D. This is also 0 because magnetic field, this path lies outside the solenoid. B outside the solenoid is 0. To put these values, all these values in first
So first becomes integration B dot dl is equal to dl plus 0 plus 0 plus 0. That is equal to dl. Now according to Ampere's circuital law, what is B dot dl? What is B dot dl? B dot dl is mu 0 times total current. Total current through closed path. This is mu 0 times. So in each turn of the solenoid, current flowing is I. It has n turns. It has n turns. Total number of turns capital N. It has n turns. The total current through the closed path is capital N I. That is mu 0 n L I, because small n was capital N upon L. So from here capital N is n into L. Now equating these two results, B dot dl की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो. If we equate both the values of this B dot dl, so what we get? We get BL is equal to mu 0 and Li. This L cancels with L. So what is B? B is mu 0 and I. This is formula for magnetic field inside a solenoid. This is B. We can write it like this also. Mu 0 n upon L into I. Now इसमें स्पेशल केस है. If the point P lies near end of the solenoid and radius of solenoid is much less as compared to length of solenoid, then B is half of the field mu 0 and I. B is half of the field at the center of the solenoid. That is, we can say B end is equal to 1 by 2 mu 0 and I. Now, if a core of if a core of material is placed inside the solenoid, जैसे iron core is placed inside the solenoid, whose relative permeability is mu r, then
B will be mu 0 mu r n I. इसका मतलब है दिस इज solenoid and some core of magnetic material is placed inside this, जिसकी relative permeability mu r है. Then its magnetic field inside the solenoid will be mu 0 mu r n I. And what is the graph? Its graph is like this. So this is on this axis we are taking B, and this axis length of the solenoid. Now length of the solenoid is L. Total length is L from here to here. We are taking this is as minus L by 2 plus L by 2. Center of the solenoid. Here center of the solenoid is at origin. Then the magnetic field is almost like this. ठीक है. तो near the end, the magnetic fields near the end. This is near the ends of the coil. The magnetic field becomes B upon 2. ठीक है. तो this is graph for magnetic field due to a current carrying solenoid. Next is magnetic field due to a toroid carrying current. What is toroid? Toroid is a helix bent in the form of a ring. अगर आप एक हेलिक्स को रिंग की फॉर्म में बेंड कर दोगे तो दैट बिकम्स ए टॉरॉइड. तो इसमें भी सेम है. आई इज द करंट थ्रू अ टॉरॉइड, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टॉरॉइड. लेट अस सपोज आर इज द रेडियस, एवरेज रेडियस ऑफ द टॉरॉइड इज आर. तो दिस एन होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टॉरॉइड, दैट इज स्मॉल एन इज एन अपॉन 2 pi r. आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द टॉरॉइड. तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इन दिस केस द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल लाई इनसाइड द टॉरॉइड. हियर मैग्नेटिक फील्ड लाई इन दिस एरिया. जो मैग्नेटिक फील्ड है एनक्लोज बाय द टॉरॉइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी और आउटसाइड द टॉरॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है. ऑन दिस साइड इफ आई ड्रॉ cross section of this diagram, तो here is turns, इसके चारों तरफ क्या होगी? टर्न्स होगी. ठीक है. इस तरफ भी टर्न्स होगी. ऐसे वायर ऐसे लपेटी हुई है. ठीक है. ऐसे इसके यहाँ पे टर्न्स, ऐसे इसके चारों तरफ भी टर्न्स होंगे. और जो मैग्नेटिक पाथ है वो यहाँ पे अंदर इनसाइड द टॉरॉइड इज द मैग्नेटिक पाथ, क्योंकि फील्ड अंदर होगी मैग्नेट इसके. तो यहाँ पे एक छोटा सा पाथ ले लो डीएल, दिस इज स्मॉल पाथ डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे बी. तो ये क्लोज पाथ होगी. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ? B dot dl. What is B dot dl over the closed path? ठीक है. This is mu 0 times total current enclosed by the closed path. What is the total current enclosed by the closed path? And is the number of turns per unit length. And what is the length of this path? Length of this path is 2 pi. Length of this path is 2 pi r into I. This is the total current. Total number of turns multiplied by current in each turn. Total number of turns multiplied by current in each turn.
Now what is this B dot dl? This is B dl. Now B and dl are in the same direction. B dl cos 0 is equal to mu 0 2 pi r and 2 pi r into I. Now B is constant, B is same over the whole path. And what is dl? What is the length of this path? 2 pi r is equal to mu 0 2 pi r I. So this 2 pi r cancels. B is equal to mu 0 and I. This is formula for magnetic field inside a toroid. We can write it like this also. B is equal to mu 0 and I upon 2 pi r. So magnetic field in the space enclosed by the solenoid is 0 and outside the solenoid is also 0. So this was the theory of magnetic effects of electric current.